Okay, ji, everybody is seeing the screen or not? Yes, sir. That's fine. Okay, I don't know कि हमने कितना कर लिया था. So uh, we were talking about we already talked about the soft handoffs, and previously we talked about the hard handoff. Is there any difference between these two? The cell dragging concept has been discussed, and there is a difference between the hard handoff and a soft handoff, because whenever you cross the boundary of the from one cell to the other, and you move from one cell to the other cell, what will happen that the new pair of a channel is assigned to the user, and it will be connected with the next base station. So this kind of a procedure is said to be a hard handoff, and whenever you are going to be, your control is going to be connected with the new base station without any allocation of a new channels, then it would be called as in a soft handoff, and that would be done into the CDMA system. We already talked about the CDMA system, so we don't have to be allot a new pair of the channel to the user. It will be remain onto the same channel, but the users are basically distinguished with their unique codes. अपने unique codes से वो distinguish हो रहे होते हैं. So this is the mainly we discuss into the last lecture की हमने discuss किया था. And okay, so everybody is now on to the everybody knows about that we have discussed into the last class. ठीक है जी, सॉफ्ट हैंड इसके बारे में हमने रेक रिसीवर के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया था. We stated that the signal doesn't come from a single line of sight, but it will have to travel. It's a scattered signal and will be accumulated at the receiver. So we may have multiple copies of the signal which comes on from the multipaths, and the CDMA system could do this. It can delay the signal for a specific amount of the time that it could be meet at last copy of the signal, so that these signal can be constructively added at the receiver, and that kind of the receiver is said to be a rake receiver. उसको हम rake receiver कहते हैं. This is the CDMA pattern. So the CDMA doesn't have any cluster. Every cell is said to be a cluster. So the cluster size of the CDMA system is 1. So whenever the important point is over here, whenever you have got a shorter cluster size, the capacity of the system is now going to be increased. Capacity increase हो जाती है. But the quality of a signal is now going to be reduced. But in the CDMA system, we are going to acquire both the quality and the capacity as well. Although the cluster size is reduced, but the quality will not suffer, because every user is distinguished with the unique code. Unique code से चूंकि distinguished है, we'll talk more onto the CDMA system whenever go through the course. Co-channel interference के बारे में बता दिया था. I have said to be many co-channel which have gotten the same frequencies used, so that could be interfere with one another. So because they are operating onto the same frequencies, but they are separated with some distance. किसी distance के साथ वो separated है, and these are the safe distance that the co-channels couldn't be able to have a significant interference that it could disturb our communication. हमारी communication को disturb कर सके. The quality factor is equal to D divided by R. B is equal to 3, and we already prove it into the class. Class के अंदर हमने इसको prove भी किया, and this is said to be a quality factor, and we discussed different aspects of the quality factor as well. The noise has been discussed. Signal to noise ratio is one of the important element into the wireless communication. Wireless communication के अंदर एक important है. So all are listening. All are with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So then we have Yes, sir.
And then we have got the noise. Noise is equal to, is directly proportional to the therm, temperature से directly proportional है. K, B और F, these are all our constant. ये सारे constant terms हैं. Is it right? So K is said to be Boltzmann constant and B is said to the bandwidth. Bandwidth जिस bandwidth के अंदर ये noise exist करती है, and one is said to be the noise figure. ठीक है जी. Noise figure जो होती है, this is the simple number game, is said to be 1 to 10. इसकी value 1 to 10. If let's suppose if it is given as in a 6 dB, अगर आपको 6 dB कहा जाए कि this is a noise figure and you are required to find out the noise, you must have to be convert that 6 dB into a linear number. So the 6 dB you can convert it is a 10 power of 6 divided by 10 is said to 0.6. Is it right? So 10 power of 0.6 will then be equal to 4. So you just have to be put in noise so you can find it over there. ये S divided by N. ऊपर S क्या चीज़ है जी? What does that S? Signal. क्या signal? What does signal? Signal Quantity. value. Signal value क्या मतलब हुआ? What do you mean by signal? Okay. What is signal value? से क्या मतलब है? Anybody else? Anybody else? जी बख्तावर. What do you mean by a signal value? Signal power. जी, signal power. This is actually a power of the signal which has been received there, and at the denominator is said to be a noise power. Noise power. तो इससे ये पता लगता है कि as much as we have got SNR is much more is much better. Is it right? सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी, इसका मतलब ये होगा सिग्नल पावर बहुत ज़्यादा है और नॉइस पावर बहुत कम है इसके मुकाबले में. सो वी स्टेटेड एज SNR is much better if we have got. So SNR is very much important for the quality of the signal. So SNR in dB is represented as in dBm minus noise power in dBm. So if 0 dBm is a signal power and 100 dBm, 1 milliwatt कितने dBm के बराबर होगा? That would be equal to 0 dBm. 0 dBm के बराबर होता है. Minus 10 power of minus 10 milliwatt. So you just have to, that would be equal to minus 100 dBm. So the SNR is equal to minus 100 dB. dB हमने लिखा 0 dBm minus 100 dBm will be equal to dB. It will not be equal to dBm. वो dBm के बराबर नहीं होता. So we already discussed. सर ये माइनस फार्मूले की वजह से आया है या ये माइनस 10 पावर माइनस 10 मिली वाट की वजह से आया है सर, ये SNR के फार्मूले में सर? ये आप देखें ना, आप जब आप लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी. यस सर. So in logarithm के अंदर जब whenever you divide the two quantities, so यस सर. in log के अंदर वो माइनस हो जाता है. Is it right? माइनस हो जाता है. यस सर. माइनस हो जाता है. आपको तो ये logarithmic है. So यस सर. the signal power in dBm minus n in dBm. Is it right? यस सर. आपके पास n आपको नजर आ रहा है ना इसके अंदर. यस सर. सर तो आपने अभी कहा है कि ये 10 पावर माइनस 10 मिली वाट ये माइनस 100 dBm के बराबर है, लेकिन फार्मूले से ये नहीं लग रहा सर. फार्मूले से तो वो 100 dBm के प्लस 100 dBm के बराबर है सर. हाँ प्लस ठीक है, हाँ प्लस 100 dBm के बराबर है बिल्कुल एग्जैक्टली. तो ये मैंने जरा गलती करके लिखी. सो दैट शुड बी दैट प्लस SNR इज इक्वल टू 100 dB. दैट्स वेरी गुड. सो वी हैव ना, दैट शुड बी 100 dB. दैट शुड नॉट बी माइनस 100 dBm. इज इट राइट? यस सर. सर और एक और कंफ्यूजन है सर, ये कन्वर्जन सर हमें कंफर्म नहीं है. आपने पहले इससे पिछले क्लास में कहा था कि आप मुझे फिर याद करवा दे तो मैं आपको ये समझा दूंगा. हाँ दैट्स बस वो मैंने नहीं किया. उसकी मुझे एक और स्लाइड इसकी हैंड रिटन बनानी चाहिए थी, तो मैं आपको इसको समझा देता. लेकिन दैट इज इंटायरली नॉट अ डिफिकल्ट टास्क इन फैक्ट. तो जब भी whenever you are going to convert a linear scale into a decibel scale, so this is an opposite operation. So 10 log of something, जो आपकी इक्वेशन होगी 10 log of this, so आप मल्टीप्लाई करें. देखें अब आपके पास 10 पावर ऑफ माइनस 100 मिलीवाट है ना नीचे. 10 पावर ऑफ माइनस 10 मिलीवाट. 10 पावर ऑफ माइनस 10 मिलीवाट. ठीक है जी. तो ये 10 log of 10 पावर ऑफ माइनस 10 हो गया. 10 log of 10 पावर ऑफ माइनस 10.
Is it right? So whenever you move -10 logarithmic स्कूल उसकी तरह, तो you will come -10 चूंकि पावर है तो वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. So that will be 10 multiplied by -10 log of 10 के बराबर हो जाता है ना. तो that will be equal to -100 हो गया, -100. तो -100 आपके पास और log of 10 is equal to 1 के बराबर हो जाता है. That will be equal to -100 dBm, -100 dBm. तो फार्मूले का एक माइनस था और एक माइनस जो है वो आपका लॉगरिथमिक आ गया इस -100. सो दैट विल बिकम प्लस. वो दोनों प्लस हो जाते हैं. वो दोनों प्लस हो जाते हैं. सो entirely the only the logarithmic rule has been applied over there. बस इतना समझना है आपको कि whenever you are going to subtract a dBm from dBm, is it right? It Yes, will sir. give you the answer in dB. dB. हाँ, ये आपको dBm नहीं देगा. dB. Yes, ये sir. आपको समझने की जरूरत है. ठीक है जी. और ये इसकी वी हैव गॉटन अ लॉजिक फॉर दैट. इसकी लॉजिक भी है. क्या लॉजिक है? कोई बताएगा इसके बारे में? Anybody can give an a logic for that? यूनिटलेस सर, ये फिर यूनिटलेस हो जाता है कि एक यूनिट दूसरे से माइनस. सर वो डिवीजन है ना सर, वो कैंसिल हो जाती है जब लीनियर में होता है तो वो कैंसिल हो जाती है. लीनियर में आप कैंसिल कर देते हैं तो मिलीवाट एंड मिलीवाट विल बी कैंसिल. दैट विल बी ओनली अ नंबर ओवर देयर इज 10 पावर ऑफ 10. So nothing will be appended with this. So whenever you do the same operation into the logarithmic scale, what will happen that will not be appended with any unit. It will be only a dB. dB is just saying that number is a decimal number without any unit. इसका कोई unit नहीं है. It's a decimal number है ये एक. Is it right? जैसे हम कहते हैं कि अगर 10 पावर ऑफ 10 है इन लीनियर के अंदर तो हम लिखते नहीं है कि ये डेसिमल नंबर है ना. तो यहाँ पे डेसिबल नंबर हमको सिर्फ शो करने के लिए कि -100 इज नॉट अ डेसिमल नंबर, दिस इज अ डेसिबल नंबर. ओके, तो दैट वुड बी हैपन. देन फिर हमने पढ़ा कि रिसीव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटिंग पावर ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रिसीव्ड होगी. एन इज व्हाट? स्मॉल एन. व्हाट इज अ स्मॉल एन? Distance. Small n is not a distance. D is a distance, but d power of n. फैक्टर 2 to 6 के बीच में उसकी वैल्यू है. J 2 से 6 के दरमियान में होती है. के दरमियान में की वैल्यू. But what does it mean to be? What is the definition of that n? N, small n. Path loss. Path loss exponent. Path Path loss exponent. That's fine. It means to be that would be a different into the different terrains, into the different landscape structure. Is it right? Whenever you are going to be moving in a very congested streets, so what will happen that n value will be much rises. So whenever you cover a very small distance, there will be enormous drop into the रिसीव पावर आपकी बहुत दिल ड्रॉप हो जाएगी. मतलब अगर आप बिल्कुल लाइन ऑफ साइट के ऊपर हैं तो n would be equal to n/2. So if you are going to change your distance, so your power will be dropped with the square of the distance. But if let's suppose n is equal to 6, if you are cover some distance away from the base station, what will happen that your power will be enormously dropped as compared to the power the value of the n is equal to 2. तो आप 6 की सूरत में थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करते हैं, व्हाट विल हैपन, आपकी पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. सो एन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बी डिजाइनिंग दिस सेल. जब आप सेल को डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज को देखना होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट एन इज बेनिफिशियल और इट्स नॉट अ गुड टर्म? ये ज्यादा होना अच्छी बात है या ये ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है? सर ये ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है सर. ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि सर वो interestingly you will come to know that the value of the n, if it is more, it is much more beneficial, बहुत ज़्यादा beneficial है. Why it is very, because we can repeat our cell in a near distance. So if you are आपकी पावर बड़ी जल्दी से ड्रॉप हो गई है, so आप अपने सेल को बड़ी कम डिस्टेंस के ऊपर रिपीट कर सकते हैं.
So whenever you repeat, the capacity is now going to be increased because के छोटे-छोटे distances के ऊपर you can reuse your frequency, अपनी frequency को reuse करें, क्योंकि वो जाके इंटरेक्शन कम होगी फिर सर, जी इंटरेक्शन कम होंगी फिर सर। नहीं, इस वो हो गया ना, आपका सेल का साइज छोटा हो जाएगा। इफ अगर आपकी ठीक है सर। पावर बहुत जल्दी ड्रॉप हो गई, so whatever the cell size is now going to be reduced. So whenever the cell size Yes, is sir. reduced, it's said to be the capacity increases. The second thing is this, because the cell size is reduced, you can reuse your frequency on a shorter distances. आप कम distances के ऊपर दोबारा उसको reuse कर सकते हैं. So the spectrum will be more efficiently utilized over there. Third thing is this, the interference element to the co-channel cells are going to be reduced as well. क्योंकि आपका बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे, तो it means to be आपके जो co-channels हैं वो जो है उनमें उन तक इंटरफेरेंस पहुंचना भी कम हो जाएगी. So it is in a beneficial term, in fact, whenever, but only the drawback is this, you have to install a more infrastructure. Where you just install a one base station, now you have to have installed more than 2 or 3 base stations there. तो आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ जाता है, बस ये इसकी एक ड्रॉबैक है. Is it right? We derived already some of the power laws, and we stated that हमने एक close in reference distance को देखा था. Close in reference distance के ऊपर we stated that this is a reference distance. At that reference distance we have gotten some power. यहाँ पे हम we assume that at that particular point, at that particular distance, there is no any signal received other than line of sight signal, other than light of sight. यानी D नॉट के ऊपर आपको बेस स्टेशन से एक ही सिग्नल मिलता है, कोई रिफ्लेक्टेड कॉपी यहाँ नहीं मिलती. This is said to be in assumption, is it right? And this particular point is said to be in a far field. Far field के अंदर, यार इसको हम कहते हैं that lie at the Fraunhofer distance. Will become discuss this as well into the next classes के अंदर भी हम इसको देखेंगे. So this is said to be a Fraunhofer distance के ऊपर या far field के ऊपर पड़ा होता है. ये आपके बेस स्टेशन के बिल्कुल करीब की जगह, जहां पे कहीं और से रिफ्लेक्ट होके सिग्नल यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा, बस एक ही लाइन ऑफ साइट से. So we stated that this is a line of sight signal. So at that particular point, the value of the path loss exponent will be equal to 2. हम इसको कहते हैं 2, लेकिन हम जनरलाइज ही ले रहे हैं. That is a P naught is equal to PT divided by D naught power of n, and P naught is a constant. This receive power at any point away from D naught will be equal to this. Is it right? दोनों को हमने डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया. So we already gone through this. ठीक है ना, P naught and D naught divided by D power of n. फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया था. We already have done this. Okay. Okay, then we have got the is it beneficial? The value of the n is more. Yes, it is beneficial. And I naught is directly proportional to 1 over d square. I stated already. इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी दोबारा कर दिया. We have got this. Okay. सर ये आई डी स्क्वायर की समझ नहीं आई सर इससे पहले वाली में. ये आई नॉट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. अच्छा, this is said to be interference. Interference. I naught is an interference. ठीक है सर. ये इंटरफेरेंस है. मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप co-channel cell के distance है ना, there is a distance between the two co-channel cells. Yes, so sir. Interference is directly proportional to inversely proportional to the d square. आपका जितना separation ज्यादा होगी between the co-channel cell, दो co-channel cell के दरम्यान में जितनी भी separation ज्यादा होगी, so that would be better. There will be a less interference. आपकी ये interference कम से कम होगी. ठीक है सर. मसलन अगर आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट 2 है, तो इंटरफेरेंस आपको 100 में से 1% मिल रही है. लेकिन उसी डिस्टेंस के ऊपर अगर आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट 4 है, तो आपको इंटरफेरेंस को चैनल इंटरफेरेंस 1 आउट ऑफ 10,000 मिल रही है. 1 आउट ऑफ 10,000. सो इट्स अ मच बेटर. आपके पास बहुत कम इंटरफेरेंस हैज बीन रिसीव्ड एट द co-channel cell. So this is just talking about the
co-channel interference के Okay, sir. Okay. We already have a quality factor is said to be Q. Actually, signal to interference ratio जो है हमने तो पहले जो पढ़ा हुआ है उसके अंदर हमने कहा कि जी क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय आर के बराबर है, यही पढ़ा है हमने ना. दिस इज क्वालिटी फैक्टर. Yes, sir. इट इज टू डी डिवाइड बाय आर. व्हाट इज डी? What is D? Diameter, sir. Sir, diameter of Channels के diameter. G. Anybody else? Diameter. And R? Distance between two Distance. channels, sir. radius, sir. Radius of the cell का radius. Radius of And the D cell, is the sir. D is the distance between the two co-channel Distance cells. between two Radius of the channels. cell. Yeah. Is the co-channel cell. It's not a diameter. ये diameter नहीं है. This is to be a distance between the two. It Yes, means sir. to be the quality will be much better if you have gotten a larger distance between the two co-channel cells. And the quality will be reduced if you have got a larger radius. अगर आपके पास larger radius होगा, ठीक है. So we have got, this is the expression, the quality factor. लेकिन हम तो quality का एक और जिक्र interference के हवाले से भी देखते हैं. And we stated that interference is a co-channel interference के हवाले से भी देखते हैं. And that is said to be कि जितना हमारा distance बढ़ेगा, जितना path loss exponent बढ़ेगा, तो हमारा इंटरफेरेंस भी कम होगा. इज इट राइट? तो पाथ लॉस एक्सपोनेंट का कोई जिक्र यहाँ नहीं है, हालांकि हम कह रहे हैं कि पाथ लॉस एक्सपोनेंट हैव एन प्रॉपर्टी ऑफ द गुड क्वालिटी और नॉट. जितना आपका एन बढ़ेगा उतना आपकी क्वालिटी अच्छी होगी. तो एक फैक्टर यहाँ भी और इंक्लूड है. सो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द क्यू, but it is also directly proportional to the power of n as well. It's a quality factor. It's said to be quality factor का path loss exponent की power से related है. So that you must have a very good signal to interference ratio if you have a good quality. So signal to interference ratio is directly proportional to d divided by, या आप इसको constant हम कहते हैं चलें, is equal to d डिवाइड बाय q की जगह मैंने d डिवाइड बाय r लिख दिया, n पावर ऑफ n लिख दिया. So now the signal to interference ratio is not only dependent upon the quality, but it is also dependent upon the path loss exponent as well. Is it right? And that path loss exponent is Sir, very उसको on the root वाला, वो on the root n वो plus or size वाला factor वो नहीं है. वो देखें ना, d by r is equal to 3n under the root. Is it right? जी. तो हमने कहा कि द क्वालिटी फैक्टर इज सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो, क्योंकि क्वालिटी होती है सिग्नल टू इंटरफेरेंस. सो वो हमने कहा कि अगर आप 3n अंडर द रूट लें, या इट इज नाउ गोइंग टू बी डिवाइडेड एज अ d डिवाइड बाय r पावर ऑफ n, तो फिर ये n वहां भी इस्तेमाल करेंगे. बिकॉज द इंटरफेरेंस, द सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी. एक डिस्टेंस का भी, देयर इज अ डिस्टेंस जितना ज्यादा हो दैट्स फाइन, रेडियस आपका जितना कम हो दैट्स फाइन. लेकिन एक और फैक्टर जो कि हम इग्नोर कर रहे थे पहले, दैट इज अ पाथ लॉस एक्सपोनेंट, जिसको मैंने बहुत तरतीब से आप लोगों को बता दिया कि पाथ लॉस एक्सपोनेंट हाउ मच इट इज एन इम्पोर्टेंट दिया टू मेंटेन अ क्वालिटी, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल. सो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द n. अगर आप 3n अंडर रूट के ऊपर n लिख दें दैट्स फाइन, उसको ब्रैकेट लगा के ऊपर n लिख दें, दैट वुड बी आल्सो इक्वल टू दिस. इज इट राइट? तो यहाँ पे हम जो है ना इसकी डिस्टेंस और रेडियस से उसको रिलेट कर रहे हैं. सो यू जस्ट हैव टू बी सी दिस. तो हम सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को लिख सकते हैं इज सेड टू बी r डिवाइड बाय d पावर ऑफ माइनस n. इज इट राइट? r को ऊपर ले गए, d को नीचे ले आए, बस दैट्स फाइन. वी हैव गॉट एक्सप्रेशन इज देयर. अब मैंने नीचे 6 भी लगा दिया. We have got a 6 over here as well. यहाँ पे एक 6 भी डिवाइड कर दिया. तो मतलब है कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो इज नाउ गोइंग टू बी डिवाइडेड विद वन फैक्टर इज 6 here. अगर if you see which one, this one, is it right? Are you seeing the center cell, the blue cell? And in that blue cell, and the first tier of the co-channel cells,
which are using the same frequencies there. यानी कि जो frequencies blue cell के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, the same set of the frequencies are using into the first tier of the cells, जो green cells हैं वहां पे भी इस्तेमाल हो रही हैं. So these are said to be a co-channel. ये सारे co-channels. इसी तरह जो next tier pink cells हैं, these are using the same frequencies. Then we have the brown cells are using the same frequency. Then we have red cells. All are using the same frequency. यहाँ पे जो colored cells हैं, all are using the same frequencies. ठीक है जी, इसको तो समझ रहे हैं आप ना? So every is now going to be using the same. The center blue cell is receiving the interference, the co-channel interference from the first tier of a 6 cell. इनसे इंटरफेरेंस मिल रही है ब्लू सेल को. ठीक है ना, यहां से जो बंदा ऑपरेट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है ब्लू सेल को, क्योंकि ये तो सारे एक ही फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं. So that is some. So the first tier is now going to be, it means to be interference is at the blue cell will become 6 times. वहां पे इंटरफेरेंस 6 टाइम हो जाती है. आप समझ रहे हैं इस पे सबको? हमजा जी सर, सही सर दोबारा बताएं. ठीक है जी. तो देखें फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास 6 सेल्स हैं. There are 6 cells into the first year, is it right? अब ब्लू सेल और फर्स्ट ईयर के 6 सेल्स जो हैं ये तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं. इसका मतलब है कि इस ग्रीन सेल से जब कोई इंटरफेरेंस यानी यहाँ पे जो ऑपरेट करेगा तो वो चूंकि सेम फ्रीक्वेंसी ब्लू सेल की इस्तेमाल कर रहा है, सो द ब्लू सेल विल फील एन इंटरफेरेंस फ्रॉम दैट ग्रीन सेल. तो ये सारे ग्रीन सेल ऑलमोस्ट एक ही पोजीशंस पे अराउंड टू ब्लू सेल पड़े हैं. सो ऑल 6 सेल आर गिविंग एन इंटरफेरेंस टू द ब्लू सेल. सारे 6 सेल पहले टियर के दे रहे हैं. इज इट राइट? नाउ यू कम टू दिस. ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है i, बेसिकली दिस इज अ 6 टाइम्स ऑफ i and the signal power is a single signal power, but we have got receiving an interference from the 6 co-channel cells into the first tier. तो आपकी signal to interference ratio 6 times कम हो जाएगी. Is it right? Because the interference power is now going to be increased. आपकी interference power increase हो रही है. So it's a 6 time increases. So you see that it will be 6 has been used over there for the first tier of the cell. पहली tier of the cell के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया. ठीक हो गया? अब ये एक tier तो नहीं है. We have many more tiers. हमारे पास बहुत सारी tiers हैं. कैसे? You see that we have got the next tier. इधर से भी कोई हमें, लेकिन इस दफा हमें कितनी मिल रही है? नेक्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से 12 मिल रही है. There are the 12 cells over there. यहाँ पे 12 cells मौजूद हैं. तो 12 is now going to be interfering the blue. Then we have got the 18 and the next year, and it will be increasing again. You see that 1 के अंदर 6 हैं, फिर 12 हैं, फिर 18 हैं. और अगर आप k के अंदर देखें तो basically whatever is the next one, जो भी next होगा, it is multiplied with the k is 1. मतलब आपके पास अगर थर्ड टियर है तो 6 multiplied by 3, so that will become 18. Yes sir. अगर आपके पास फोर्थ टियर है तो 6 multiplied by 4 will become 24. So k is a factor. k जो है वो वैल्यू 1 2 3 से reduce की गई है. If k is equal to 1, so you are talking about the first tier. So total number of interfering cell will then be equal to 6. If k is equal to 2, so total number of the interfering cell will then be equal to 12 and 18 and up to so on. So k is representing the tier. ये tier को represent कर रहा है. Now over here you see that कि मैंने अब इसको generalize करने की कोशिश कर ली. I say that it is a 6k. dk is the distance between the center cell एंड को चैनल सेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये वही डी, हमने डी वही फार्मूला के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, उसको मैंने डी के लिख दिया.
मसलन थोड़ा सा इसको फिर भी समझ लें आप, यहाँ पर ब्लू सेल और ग्रीन सेल के दरमियान में डिस्टेंस क्या है? मैंने कहा डी है. I say to be this is D. Then what will be the distance between the blue cell and a pink cell? Is 2D. Then what will be the difference between the distance between the blue cell and a brown cell? That will be a 3D and up to so on. ठीक है जी. तो पहली टीयर का डिस्टेंस 1D के बराबर है. सेकेंड टीयर के जो डिस्टेंस है को चैनल सेल का, that will be equal to a 2D. And up to so the KD will be the appropriate. K is said to be 1 tier, is said to be 1D, 2 tier is said to be a 2D. And तो मैंने D के हर एक tier यानी D3 let's suppose is said to be a tier 3. What would be the difference of the blue cell with the third tier cell के साथ क्या difference होगा, distance होगा? तो that will be equal to 3 multiplied by D. D is the distance between the blue cell and the green cell into the first tier के अंदर. So that would distance be equal to this. तो मैंने इसको generalize कर दिया. You see that 6K is the first tier की interferences है, and DK is the distance between the tier and the cell in a tier and the co-channel cell at the center. So अगर आप इसको, और मैंने इसकी summation कर दी, मतलब हर एक टियर के ऊपर let's suppose K is equal to 1. K is equal to 1 से क्या मतलब होगा? तो वो पहला वाला सर जो पहला टियर फर्स्ट ईयर ग्रीन से फर्स्ट टियर हो गया. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड D1 पावर ऑफ -n. तो पहले टियर के 6 सेल्स हो गए, K आपके पास 1 हो गया, मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ पहले टियर के साथ, और D जो है वो पहला डिस्टेंस है D1 का. लेकिन अब सेकंड टियर के जो सेल्स है, जो 12 सेल्स है, वो भी तो इंटरफेयर कर रहे हैं. तो फिर आप क्या करेंगे, K की वैल्यू को 2 कर देंगे. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 and the distance between that is D2. D2 is equal to 2D के बराबर, यानी डिस्टेंस डबल हो गया. सो डबल आउट डिस्टेंस. तो इसकी जगह पे आप 2D पावर ऑफ -n भी लिख सकते हैं. तो सेकंड टियर का सम हो जाएगा विद द फर्स्ट टियर के साथ. Then the third tier, the K is equal to 3, it will become 18 and D3. D3 will then be equal to 3D, यानी कि डिस्टेंस जो पहले डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया. So that would be added again, sum up हो जाएगा as much as you have in a tier. For example, आपके पास 10 tiers हैं. So K is equal to 1 to capital K 10. You just have to be added this. So the signal to interference ratio you will be calculated by using this formula. इस फॉर्मूले से आप कर सकेंगे. हमने क्या किया, DK को सिंपली रिप्लेस कर दिया KD के साथ. KD इसके अंदर डाल दिया. वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन. आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है जी, पॉइंटर जो मैं मूव कर रहा हूँ? यस सर, इससे हेल्प बहुत हेल्प हो रही है सर. ठीक है जी. सो वी हैव ना KD, इफ यू सी दैट ओवर हियर. ठीक है, मैंने क्या किया कि DK की जगह मैंने KD को कर दिया यहाँ पे. सो वी हैव गॉट अ KD ओवर हियर एंड द पावर ऑफ -n is again here. Then you see that कि हमने क्या किया कि 6 को बाहर कर दिया और D पावर ऑफ -n को बाहर कर दिया. D पावर ऑफ -n and 6 is out of that expression summation because these two terms are independent upon K. So we have left it over here is only a 2 terms, and that is a K and 1 -n. Can you do this? K multiplied by K power of -n. That will be equal to K power of 1 -n. So we can write it over there. जो D power of -n बाहर आया तो मैं उसको ऊपर ले गया, तो ये D divided by R power of n के बराबर हो गया. And D by R is equal to 3n under the root. वो हमजा वाली बात जो is said to be D, and D is equal to R3n under the root. I just replace D divided by R power of n with the 3n under the root power of -n. So we have got the final expression is there. Any question? This is a very important. सर ये नीचे से D पावर -n कॉमन किया है ना सर? जी जी बिल्कुल सर. ये फिर ऊपर चला गया सर, ये ऊपर चला गया तो ये प्लस हो गया, D पावर ऑफ n हो गया. तो yes, D पावर ऑफ
n और डिवाइडेड बाय r पावर ऑफ n। ठीक है सर। ठीक है, d डिवाइड बाय r पावर ऑफ n हो गया। सो वी जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस, हमने उसको रिप्लेस किया बस। So we have got, this is the expression, and you can have this. तो दिस इज अ सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो। ये आपका दो चीजें मैंने आपको, एक तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बताई थी ना आपको, सिग्नल एस एन आर। लेकिन हमें तो सिर्फ नॉइस तो नहीं हमने वो कहना है, बिकॉज नॉइस नॉइस किस वजह से, दो चीजें मैंने, वन इज सेड टू बी इंटरफेरेंस, द अदर इज सेड टू बी नॉइस। नॉइस, ये किसका जी माइक ऑन है? प्लीज टर्न इट ऑफ। दैट्स फाइन। Okay, so we have got the two terminologies there. One is said to be a noise, the other is said to be interference. अच्छा, noise क्या चीज है? Noise क्या चीज है? Anybody? Anybody? Signal, sir. जी, अनवांटेड सिग्नल। नहीं अनवांटेड तो है, अनवांटेड तो एडिटिव सर वो है AWGN। वो देखो एडिटिव AWGN तो है, लेकिन ये मैंने इससे पहले आपको क्या मैंने इसका फॉर्मूला बताया नॉइस का। ये किस वजह से होता है? ये नॉइस किस वजह से पैदा होती है? थर्मल की वजह से। थर्मल टेम्परेचर की वजह से होती है। सो इफ द हीट और द टेम्परेचर राइजेस, व्हाट्स हैपन, दैट नॉइसेस विल बी दैट विल बी प्रोड्यूस एट द रिसीवर एंड। ये भी याद रखें, रिसीवर एंड पे ये प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस कहाँ होती है? रिसीवर एंड पे। आपका जो रिसीवर है उसके जो आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगाए हुए हैं, उसके अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं जो, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो वो वैलेंस शेल के अंदर चले जाते हैं व्हेनेवर इट गॉट एंड हीटेड। तो जब वो वापस दोबारा अपने लोअर शेल्स के अंदर जाते हैं, व्हाट हैपन, इट रेडिएट्स एनर्जी को रेडिएट करते हैं, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली द सोर्स ऑफ अ नॉइस ऑफ द डिवाइस की नॉइस है। तो रूम टेम्परेचर यानी नॉइस फिगर वो जितनी बढ़ेगी, व्हाट्स हैपन, द नॉइस विल बी इंक्रीजेस। वो रूम टेम्परेचर, कहीं पे आप सिपी में बैठे हैं, कहीं आप मरी में बैठे हैं, तो मरी में आपका मोबाइल सेट जो है वो ठंडा रहता है आपका जो कहीं और। सो द डिवाइस कोप विद द रूम टेम्परेचर। अगर वो ज्यादा अच्छे एलिमेंट्स और क्वालिटी के सर्किट्स लगे हुए हैं, सो व्हाट्स हैपन, वो ज्यादा हीट अप नहीं होगा। सो द नॉइस फिगर ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस विल बी डिफरेंट होती है। क्यों? मोबाइल का जो होगा वो नॉइस फिगर डिफरेंट होगा, और जो आपका सैमसंग का डिवाइस होगा उसका नॉइस फिगर, तो एक ही रूम टेम्परेचर के अंदर दैट विल बी बिहेव विद डिफरेंटली देयर, इज इट राइट? सो द क्वालिटी विल डेफिनेटली इफेक्ट देयर। तो वो नॉइस है, दिस वाज नॉट एन इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस, इट शुड नॉट बी मिक्स विद द इंटरफेरेंस एंड नॉइस। वो थर्म की वजह से पैदा होती है। इंटरफेरेंस जो है वो को चैनल सेल्स की फ्रीक्वेंसीज की वजह से पैदा होती है। और वो कौन से को चैनल सेल होते हैं? इनटू द फर्स्ट ईयर, इनटू द सेकंड ईयर, इनटू द थर्ड ईयर, all are going to make an interference to the center cell, is a co-channel cell. What will happen? That will be a interference. तो मैं अगर सम अप करूं तो सिग्नल पावर को दो चीजों के साथ मिलाकर देखना है, द सिग्नल पावर विद द नॉइस, द सिग्नल पावर विद द इंटरफेरेंस. So it must be an expression like this. It's said to be signal to noise plus interference ratio. डिनोमिनेटर के अंदर ना तो सिर्फ नॉइस होती है और ना ही सिर्फ इंटरफेरेंस होती है, बट इट्स n प्लस i, तो नॉइस प्लस इंटरफेरेंस, सो सिग्नल टू नॉइस प्लस इंटरफेरेंस रेशियो। तो हमें इसको इस तरह देखना है। तो दिस इज अ क्वेश्चन देयर, यू नीड टू सॉल्व दिस, सॉल्व करना है आप लोगों ने। इफ नॉइस फिगर ऑफ अ मोबाइल, एक क्वेश्चन है सर, इससे पहले स्लाइड में सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताएंगे सर। ये एक इक्वेशन ही है, d इज इक्वल टू r अंडर रूट 3n ना सर, ये कैसे, ये फार्मूला कहाँ से आया है सर? ये d डिवाइड बाय r इज इक्वल टू n के बराबर है, q के बराबर है, 3n अंडर द रूट के बराबर है। हाँ पढ़ा था जी। यस सर, याद आ गया सर, याद आ गया। सर वो क्वालिटी फैक्टर में था सर, क्वालिटी फैक्टर में था। वहाँ हमने क्या d डिवाइड बाय r को 3n अंडर रूट के बराबर कर दिया यस बस। सर।
This is only this one, is it Yeah, right? yeah, yes, sir, yeah. 3 and under root. तो d divided by r को मैंने वो करके 3 and under the root कर दिया. So we will have this expression. और सर Okay? इसमें एक और भी है सर, ये डी हम जब कॉमन करते हैं, इससे पहला वाला स्लाइड सर जरा दिखाई सर, ये डी डी पावर माइनस एन जब कॉमन करते हैं ना सर, सर ये डी ऊपर जाता है ना, तो एन की वैल्यू सर ये प्लस नहीं होगी, जो ये 3n अंडर रूट पावर एम माइनस एन है सर, ये प्लस एन नहीं होगी सर? प्लस हो गया. मैंने सर ये मैंने अभी कॉपी में किया है तो मेरे साथ प्लस आ रहा था, इसलिए सर पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ बिल्कुल प्लस होगी. d जब मैं ऊपर ले गया, so Yes, that sir. will become d power of n. वो सर r ये power of समेशन वाला पार्ट इससे कॉमन करे ना सर, तो आर पावर एन डिवाइडेड बाई डी पावर माइनस एन सर, दोनों पे माइनस होता है सर, तो ये दोनों उल्टा करे ना सर, तो आर ऊपर ले नीचे लेके आए और डी ऊपर लेके आए, तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी एन सर, दोनों से फिर एन कॉमन करे तो ये एन प्लस में मुझे नजर आ रहा है सर. ठीक है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल. यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यू जस्ट हैव टू बी करेक्ट दिस. ओके, तो d जब ऊपर चला गया that will become n, r नीचे चला गया तो it will become as n again, r power of Yes, n. sir. तो d divided by r power of n आ गया. So d divided by r is equal to 3n under the root के बराबर है, power of n हो जाएगा. That's very good. तो ये चीज हो गई. ठीक है जी. Okay, we have to solve the next question here. तो ये चीज़ें ये आपको डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने होंगे. ठीक है जी. अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है सो यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. हाउ मच वट एवर इट इज़ डिफिकल्ट ना, जितना भी डिफिकल्ट होगा अगर आप समझ बैठे हैं इसको तो यू कैन. हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे ना करा पाऊँ, लेकिन यू जस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ द parameters. Okay, if noise figure of a noise figure, I'm talking about the f. तो आपको पता होना चाहिए noise figure of the mobile is measured to be a 10 dB. अब मैंने कोई नंबर नहीं दिया आपको, यहाँ पे मैंने इसको डेसिबल के अंदर दे दिया. So if it's a decibel, you must come to know that what does it mean to be. Is it right? So does 10 dB का क्या मतलब होगा कि लीनियर के अंदर कितना होगा ये? 10 sir. That will be equal to 10. That would be equal to. So it means to be whenever you are going to find out the noise power, so that will be equal to kBFT. तो f की जगह आप 10 डाल देंगे, 10 dB नहीं डालेंगे. ठीक है, that will not be a dB, that will be a linear scale. Find signal to interference ratio, SINR, signal to interference plus noise ratio, while considering a सर मेरा 3 क्वेश्चन है tier. सर. जी बोलेंगे. सर अगर ये 10 dBm होता सर पे ये लीनियर में किसके बराबर होता सर? ये 10 dBm नहीं होगा ना. This is not a power. Noise figure is not a power, it's a number. तो it must be in dB. ये आपका dB में होगा या आपका लीनियर स्केल होगा. आपको कहा जाएगा कि इट्स एन इक्वल टू 10 विदाउट एनी यूनिट, सो इट्स या आपको कहा जाता है कि दिस इज 6. तो 6 को फिर अगर आप dB में देखना चाहेंगे तो 10 पावर ऑफ 0.6 के बराबर होगा. दैट वुड बी इक्वल टू 4. ठीक है जी. तो ये dBm नहीं होगा. दिस इज नॉट अ पावर. ये पावर नहीं है नॉइज फिगर सीधा सीधा एक नंबर है. तो फाइंड SINR व्हाइल कंसीडरिंग अ 3 tier ऑफ इंटरफेरेंस. अब मैंने बता दिया कि k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है. सही सर. So there is an so the value of the value of a tier, number of tiers is in consideration is said to be a 3 tiers. हमने 4 5 को नहीं देखना, हमने कहा कि बस 3 tier considerable interference डाल सकते हैं. वो चौथा काफी दूर हो जाता है, 5 भी काफी दूर है, तो वो इतनी इंटरफेरेंस नहीं प्रोपोगेट करती यहाँ पे. सो वी आर कंसिडरिंग ओनली अ 3 tier. अदरवाइज तो टीयर्स तो फिर बहुत होते हैं. 3 tiers ऑफ इंटरफेरेंस है एंड 7 सेल क्लस्टर है हमारे पास. एज्यूम n is 4, where the signal power is equal to 1 milliwatt or it is equal to 0 dBm. ठीक है जी, milliwatt या 0 dBm. You are required to find out the signal to interference plus noise ratio. ठीक है जी, signal to interference
plus noise ratio. सर आपने अभी कहा ना कि ये 10 dB 10 के बराबर है ना सर लीनियर में। जी 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 जी। सर तो सर ये क्वेश्चन ये था कि dB और dBm दोनों एक ही फार्मूले से कन्वर्ट होते हैं लीनियर में सर, दोनों एक ही क्योंकि काम। इससे वहाँ पे मिलीवाट आ जाएगा अगर आपका डीबीएम है, यस तो सर। लीनियर के अंदर आपका मिलीवाट आ जाएगा, इन अच्छा मिलीवाट ठीक है, उसके साथ यूनिट आएगा फिर। यूनिट आएगा ना। अगर डीबी में ठीक होगा है तो सर, फिर यूनिट नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। ना। हाँ इसमें ठीक है जी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइस रेशियो। कैन एनीबॉडी डू दिस? कॉपी में कर सकते हैं जरा जल्दी जल्दी से? कैन यू डू दिस? So you can find out the noise by using a KBFT. KBFT. If let's suppose we stated that this is a GSM system, you have to do that calculation for a GSM system. Just 2G system, 2G के mobiles के लिए आप करना चाहते हैं. So you just have to be put all the values in this. यहाँ पे आपने सारी values को put up करनी है. For instance मैं सर कहता हूँ इसमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, इससे पहले वाला जो आपने अभी ड्राइव किया है सर? टेम्परेचर आपको कह दिया जाता है कि 273 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो नॉइस को तो आप सीधा सीधा नीचे से इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस। नॉइस विल बी इक्वल टू KBFT. We already explained it into the previous slides. So KBFT, we know F, we know T. What is that T? क्या वैल्यू होगी? रूम टेम्परेचर सर। रूम टेम्परेचर। जो मैं बता 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैं बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है। सो सर व्हाट इज इसको दैट फिर T? केल्विन में भी डाउन कन्वर्ट Kelvin करना है। में, that's fine. You have to convert it into the Kelvin. This is my point, right? So 27 plus 273 is become 300. So the temperature will then be equal to 300. 300 के equal हो जाएगा. F is equal to, you already know, is said to be, कितना बताया आपको? Is 10. F is 10. We already have in 10 dB. तो ये dB नहीं होगा, ये linear होगा. 10 dB is equal to 10 in linear. Linear के अंदर भी वो 10 के ही बराबर है, इसलिए we have got. What is K? Is a Boltzmann constant. That would be equal to 1.23 into 10 power of 20, 1.38 into 10 power of 23 minus 23. You just have to put there. What is B? This is a question. ये B है क्या चीज? जरा इसको कोई डिफाइन करेगा? बैंडविड्थ सर। बैंडविड्थ होगी। तो जिस बैंडविड्थ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज साइड टू बी फॉर ओनली दैट बैंड। उस बैंडविड्थ के बाहर तो हमें नॉइस का कोई लेना देना नहीं है ना। लेट्स सपोज अगर कोई भी बैंडविड्थ है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? इको किस अगर जीएसएम के लिए, अगर जीएसएम के लिए है तो GSM 200 मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज सॉरी 200 किलोहर्ट्ज। यस सर। तो अगर आप कहा कि जी जीएसएम के लिए करना है तो फिर ये है। अगर मैं आपको कहूँ एम्प्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल्स के लिए करना है, तो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल इज सेड टू बी 1G एंड इट इज यूजिंग एन एम्प्स, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स, and the bandwidth of that mobile system have got an 30 kilo hertz, is a 30 kilohertz. So 30 kilohertz for the amps. अगर मैं amps लिख देता या first G लिख देता, so you just have to use, and that bandwidth is equal to 30 kilohertz. So that will not be given to you. It is actually given into the GSM or amps, or I say to be in 3G CDMA system के लिए मैं कह रहा हूँ, तो then you will have to put in a 5 megahertz. वहाँ पे आपने फिर 5 मेगाहर्ट्ज लगाना होगा इन जीएसएम सिस्टम्स के लिए। सॉरी, इज फॉर द सीडीएमए सिस्टम्स के लिए। इज इट राइट? सो नॉट कैटेगोरिकली गिवन टू यू द बैंडविड्थ ओवर हियर, सो यू जस्ट हैव टू बी यूज अ बैंडविड्थ, you just have to see that what system is going to be used here. So you can find a noise here. Signal to interference ratio, you can find it. कैसे find करेंगे? By using this formula.
ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे ना सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो के लिए. वी हैव गॉट दिस. वी हैव गॉट अ क्लस्टर साइज n इज इक्वल टू 7. ये n क्या है? 7 है. k हमारे पास क्या है? 3 है, बिकॉज ये जो कैपिटल K है दैट इज टू बी 3. हमने 3 टीयर्स के लिए करना है, सो k इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए समेशन के लिए वेरी करेगा. वी नो n कितना है हमारे पास? n is equal to 4. So you just have to put that n over here. So all in all, the values are known here. So you can find signal to interference ratio. We already know s as well. हमें s भी पता है. s भी पता है, यानी ये s divided by I is equal to this. We know all the parameters there and also the signal power as well. So you easily find out the interference by using this expression. आप यहाँ से find out interference को कर देंगे. You have an interference then, and you just have to put the value of the interference, the noise, the signal powers. You can find that signal to interference plus noise ratio at all. Is it right? नो सर, इसकी सर समझ नहीं आई सर. सर ये इंटरफेरेंस किस तरह फाइंड करेंगे सर? इंटरफेरेंस तो देखिए ना, सिग्नल, अब मैं दोबारा आपको बताऊं, ये देखिए सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो है ना, ये इस फार्मूले के बराबर, इस फार्मूले के बराबर. इस फार्मूले में क्या है? n भी मौजूद है. व्हाट इज n? इज अ क्लस्टर साइज व्हिच इज 7. साइज, यस सर. ये n हमने दिया हुआ है 4, ये भी हमें पता है. ये k जो कैपिटल K है वो हमारे पास 3 है. 3 टीयर्स के तक जाना है तो ये भी हमें पता है सब कुछ. तो ये सारा कुछ हमें पता है, ठीक है. और s डिवाइड बाय i विल बी इक्वल टू इसके बराबर है. s डिवाइड बाय i इसके बराबर है ना. और हमें s भी पता है, s भी पता है एक्चुअली. ठीक है सर, s भी पता है ना. यस सर. देखिए हमने यस सर, लिखा हुआ है s इज इक्वल टू दिस. तो जब आपको s भी पता है तो यू कैन फाइंड, तो फिर आप i मालूम कर सकते हैं. ठीक है, s डिवाइड बाय i इज इक्वल टू दिस के बराबर है. ये सारी वैल्यू इसके अंदर डालें, यू कैन फाइंड i. आपको i मालूम हो जाएगा. ठीक है. वंस यू हैव गॉट आई, जब आपको आई मालूम हो गया, नॉइस आप यहाँ से मालूम कर लेते हैं. यस सर. ठीक है. सिग्नल आपको पता है तो आप ये सारी डाल के तो वैल्यू को मालूम कर लेंगे. सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइस विल देन बी इक्वल टू सम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू विल डिफाइन दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन. आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी क्या है. इज इट राइट? So that's very fine. It's an interesting part of that US lectures. तो ये थोड़े से आप देख लें. Carrier to interference ratio, we already describe all this. ये मैं सब वो अपने hand writings के अंदर बता चुका हूँ. ठीक है जी. We have ना 6 क्यों लगाया approximately. We have ना 6 divided by 6, so n की ये d divided by r power of n के बराबर. First year of hexagon geometry के अंदर we have got this. Then we stated that there is not only a signal tier, but we have got a number of the tiers there. So interference not only comes on from the first tier, but it have to be come from the next tiers as well. तो power को मैं already explain कर चुका हूँ. You receive power with reference to the close in reference distance के साथ, और P naught is the power at that voltage. जब मैं इसको अगर एक्सप्रेस करूं इनटू द लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर या यूनिट्स के अंदर, रिसीव पावर इन dBm विल देन बी इक्वल टू P नॉट. ये वही लॉगरिथम है और कुछ नहीं है. जहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी P नॉट विल बी एडेड विद दिस टर्म. तो उसने ऐड किया यहाँ पे. माइनस n को पहले ले आए तो माइनस 10n हो जाता है. सो इज लॉग ऑफ d डिवाइड बाय d नॉट. जी सर, डी और डी नॉट में क्या फर्क है सर? d तो क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस है ना, और d किसी भी डिस्टेंस के ऊपर. ये देखें ना, ये d नॉट है वो पॉइंट जहां पे प्योरली लाइन ऑफ साइट, एंड वी स्टेटेड दैट कि आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट 2 के बराबर है. इज द बेस्ट जो हम कह रहे हैं. और d जो है वो डिस्टेंस जहाँ पे आप इस फार फील्ड से परे हैं, किसी जगह पर हैं, तो वहां आप रिसीव पावर देखना चाहते हैं, तो वो जिस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो वो डिस्टेंस है. इज इट राइट? यस ये वो डिफरेंस है.
तो ये वो d डिवाइड बाई d नॉट है, और जो मैंने वहाँ पे इक्वेशन में इसको प्रूफ किया है, दोनों को रिसीव पावर्स को डाल के, और फिर वी हैव डॉट। तो वो हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इनटू द लीनियर एक्सप्रेशंस एज वेल। ठीक है जी। तो पावर इज अ क्लोज इन रेफरेंस पॉइंट है इन अ फार फील्ड रीजन ऑफ द एंटीना एट अ स्मॉल डिस्टेंस एंड द पाथ लॉस कंपोनेंट इज 2 to 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को जो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन आयत इंटरफेरेंस सेल यानी आयत टीयर्स के ऊपर मैं इसको देखता हूँ, तो आई जस्ट हैव टू गॉन थ्रू ऑल दैट सिग्नल फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मेशंस देयर, उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड देन वी हैव दिस, ये वो जो मैथमेटिकल findings हैं, we are already explained into my writing, you just have to go through that slides, इन slides से आप गुजर जाएं and then you see that क्या आपके पास क्या values आती हैं। if you are keep on increasing k यानी क्या, tiers, number of tiers को बढ़ाते रहे, whenever the number of tiers become infinite, जब infinite हो जाए तो denominator क्या हो जाएगा, infinite, and whenever it become infinite the signal to interference ratio will become as 0, so that the communication is not possible there, तो कोई possible नहीं होता। So this is said to be a limited factor, ये आपके पास limited factor, it have got an limitations there। So if a k approaches in number of tiers approaches to infinity, the signal to interference ratio will approach to 0 as well। Okay, okay, this is all for today। if you have any questions in that, let me know, तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने जो असाइनमेंट दिया था सर, वो क्वेश्चन जो सॉल्व करना था सर, वो वाला सर, ये वाला सर, इससे हाँ, ये वो वाला असाइनमेंट कैसे, सर, इससे सर मैं बहुत ट्राई किया लेकिन तो कैसे आप, सही जवाब ही नहीं आ रहा था सर इससे। ये क्या कह रहे हो यार, कौन सा क्या असाइनमेंट थी मुझे बताइए सर ये पिछले वाले slide? स्लाइड में वो सर, पिछला एक क्वेश्चन पिछले वाले सर, पिछले वाला ओके सर, आप ये कह रहे वाला, थे ये वाला सर, ये वाला ये वाला सर, ये तो सबसे आसान है यार, ये तो सबसे आसान नहीं है ये सर। सर जवाब इसी नहीं आ रहा था सर, ये 100.4। नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही कोई लिख दिया था, हो सकता है कि ये ना हो। सर हम तो इससे चेक कर रहे थे, ये नहीं आ रहा था 100.4। मैंने तो बस वैसे ही एक फर्जी सा लिख दिया था यहाँ पे कि ये चलो 100.4 इसलिए लिखा था, आई वांट टू क्लियर यू व्हाई व्हाट वी विल डू विद अ 0.4 एरिया। अच्छा सर, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ सेल्फ मस्ट बी 101, इट कैन नॉट बी 100, ये 100 नहीं हो सकता, इट विल बी 101। 0.4 एरिया को तो हमने नहीं छोड़ना ना, उसको भी कवरेज देनी है, तो हमने एक तो सेल वो बढ़ा देना है कंपेंसेट रादर करेंगे, देन जी कंपेंसेट करेंगे सर। हाँ अच्छा सर हम हाँ, देख तो रहे थे 101 तो आपका जो भी आंसर आया हो तो आपके आपस में मैच होने चाहिए इसके साथ। तो ये तो सिर्फ इसलिए मैं बयान कर रहा था कि जो 0.4 का जो रीजन है उसको कैसे कवर किया जाएगा। जैसा So 3-4 you just मतलब have to सॉल्व cover किया है, that और कभी एक तरीके से सर, कभी 101। दूसरे तरीके से। नहीं, बस इसका एक ही तरीका है, कोई 2-3 तरीके नहीं है, आराम से आसानी से हो जाता है। ठीक है जी, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। और ये किस तरह आप मुझे देंगे? सर इसका असाइनमेंट सर बनाए सर क्लासरूम में, और उसमें सर हम फिर सबमिट करेंगे। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट टाइम इसका प्रोसीजर देखता हूँ। आई थिंक द नेक्स्ट इज द ईद डे आ रहा है जी। सर यस सर, दूसरे हफ्ते में ईद है यार, कमिंग फिर ईद है सर। उसके ओके, बाद देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, सही है जी। तो विश यू अ तो बेस्ट ऑफ कमिंग वीक लक, में और फिर क्लासेस नहीं है सर। आप सबको ईद मुबारक हो एडवांस में। और सर आपको आपको भी इंशाल्लाह मुबारक सर। और मुबारक सर, आपको भी मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। सो वी विल मीट आफ्टर एन ईद। ईद के बाद हम इंशाल्लाह फिर मैं मैसेज कर दूंगा इन सर ग्रुप देन। जी जी, एक मिनट जी, सर आई जस्ट हैव स्टॉप रिकॉर्डिंग।